Hello, dear students. Very warm welcome. Uh, Previously, we were reading about the chapter outcomes of democracy. So far, we have read that the economic inequalities faced in the democracy, the voice of the poor. That's what we read. That's what we discussed in through this cartoon. Also, we understood the voice of the poor. So there has been reduction of inequality and poverty, and it must be the aim of the democracy. Democracy is totally based on the political equality, that everyone gets the political rights, right to vote, right to form association, right to form political party, and right to contest election. The basic needs of the people must be fulfilled. Now, everyone, in today's class, we will continue with the next topic, and that is accommodation of social diversity. Very interesting topic this is. Here you can see a cartoon given to you. Very interesting cartoon. Here you can see that 2% written here, and it is showing you the unequal distribution of the world's wealth, the unequal distribution of the world's resources, where only 2% of the people of this world, the ultra rich section of the society, that section has much of the share in the world's wealth, whereas 50% of the people or the section of the society, they have very less share. So this is showing you the unequal distribution of the resources, and this is creating very like adverse circumstances. Like poor section, there has been a gap between the rich and the poor, and the gap is widening. This is very serious concern. This must be tackled with, and how to tackle it? To have a mechanism where we can just have equal kind of distribution as far as the resources are concerned. Now the next topic is accommodation of social diversity. तो accommodate करना सभी जो section of society उन सबको, ये सबसे ज्यादा important है. इसमें example याद करो श्रीलंका का, the example of Sri Lanka. So the Sri Lankan example reminds us that a democracy must fulfill two conditions. डेमोक्रेसी जो है उसको दो कंडीशंस फुलफिल करना बहुत जरूरी है. हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, वी जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट what kind of mechanism was followed by the Sri Lanka, that majoritarianism concept. और फिर क्या हुआ, सिविल वॉर ब्रोक आउट हुई ना. यहाँ पे वो जो एग्जांपल है वो हमें दो चीजें बताता है कि ये दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी में. और वो क्या है? सबसे पहला, that it is necessary to understand that democracy is not simply ruled by majority opinion. कि हमें यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि डेमोक्रेसी जो है उसका मतलब ये नहीं कि मेजोरिटी ओपिनियन जो बोल रहा है या मेजोरिटी कम्युनिटी के बेसिस पे सारे डिसीजन लिए जाए. श्रीलंका में क्या हुआ था? यही हुआ था ना. द डिसीजंस वर टेकन अकॉर्डिंग टू द सिन्हेलास, एंड व्हाट हैपेंड लेटर ऑन? सिविल वॉर ब्रोक आउट. सो द मेजोरिटी always needs to work with minority. So there must be coordination, there must be harmony in the society, and that's how we can thrive. We can get prosperity. Otherwise, if there will be no harmony, if there will be differences, if there will be adversary, then what will happen? The civil war will happen, and that happened in Sri Lanka. तो श्रीलंका में हुआ या नहीं हुआ? तो ये श्रीलंकन एग्जाम्पल ऑल्सो शोज अस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकोमोडेटिंग द सोशल डाइवर्सिटी. सोशल जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के अंदर, सभी को अकोमोडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ये दो कंडीशन हम सीखते हैं यहाँ से, that governments function to represent the general view. और गवर्नमेंट कैसा व्यू दे? जैसे श्रीलंका में क्या दिया था उन्होंने? they followed the Sinhalese, like Sinhala was like made as the official language. Sinhalese were given the priority in the government jobs and all. Tamils were like humiliated, they were discriminated on different bases. So this was the not a good thing. ये एक अच्छी चीज नहीं थी जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ. तो हमें ये भी समझना होगा, और श्रीलंकन एग्जांपल हमें ये भी बताता है कि दैट गवर्नमेंट मस्ट हैव द जनरल व्यू. चाहे हमारे देश में मे बी 80% हिंदूज है ना, और इन एनी अदर कंट्री 80% 70% कोई एक ग्रुप हो सकता है, बट दैट डजंट मैटर फॉर द गवर्नमेंट. इन ए डेमोक्रेटिक अप्रोच, डेमोक्रेसी के अंदर सब इक्वल है, क्योंकि वहां पे माइनॉरिटी सेक्शन या मेजोरिटी सेक्शन कोई मैटर नहीं करता. वहां पे इवन माइनॉरिटी के पास भी चांस होना चाहिए कि वो मेजोरिटी बन सके. अब इसका क्या मतलब है सर? माइनॉरिटी के पास भी चांस होना चाहिए मेजोरिटी बन सके. इसका सिंपल सा मतलब है कि जिसको आप सेक्शन बोल रहे हो, माइनॉरिटी ग्रुप, पॉलिटिकली वो भी एसोसिएशंस फॉर्म करके या एक तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप में आ सके, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में अपना रोल प्ले कर सके, गवर्नमेंट में आ सके. कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. किसी ने रोका है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी को, चाहे वो कोई भी हो. जस्ट एक सिंपल एग्जांपल ऑफ इंडिया, आवर कॉन्स्टिट्यूशन guarantees that anyone, irrespective of caste, irrespective of creed, irrespective of religion, can be prime minister, can be minister, can form government. Anyone can form political party.
नो वन कैन स्टॉप यू, है ना। आप लीगली अगर सारी अच्छी चीजें कर रहे हो तो आप बिल्कुल in legal way, in a non-violent method, if you want to form any association, want to contest election, you all have all the right. So majority and minorities opinions are not permanent. What is permanent? Permanent is very simple कि जनरल व्यू, तो गवर्नमेंट का व्यू भी कैसा होना चाहिए? जनरल होना चाहिए। तो श्रीलंका वाले में क्या गवर्नमेंट का व्यू जनरल था? याद करो, we saw in the power sharing chapter, Sri Lankan did not follow the general view. What they followed? They actually followed the majoritarianism. उन्होंने एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ज्यादा प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से क्या हुआ? डिफरेंसेस, और दूसरे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ह्यूमिलिएशन होना स्टार्ट हुआ। ये बहुत ज्यादा जरूरी है दैट सोसाइटी के अंदर हार्मनी बनी रहे फॉर आवर प्रॉस्पेरिटी। तो ये चीज हम सीखते हैं श्रीलंका के एग्जांपल से। सेकंड और कंडीशन आपको बता रहा है कि दैट it is also necessary that rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion or race or linguistic group etc. कि अगर हम बात कर रहे हैं दैट, आप सबको ये चीज पता है कि सर इलेक्शन में जो मेजोरिटी लेता है, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होता है, इफ एनी पर्सन गेट्स द मेजोरिटी, द पर्सन इज गेट्स इलेक्टेड, सिंपल। वो इलेक्शन हो, उसको इलेक्ट कर दिया जाएगा। तो सर हम यहाँ पे क्या सीख रहे हो, क्या बात कर रहे हैं? मेजोरिटी ओपिनियन का मतलब हम ये नहीं रहे कि मेजोरिटी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन हो, या मेजोरिटी अगर कोई कास्ट कोई किसी मेजोरिटी में है तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन हो, नहीं। मेजोरिटी का मतलब है पॉलिटिकल वे में, पॉलिटिकल मेजोरिटी। What we are actually discussing, the political majority. So rule by majority simply means that in case of every decision or in case of every election, different persons and groups may and can form a majority. So majority का मतलब political majority, here we are talking about that any group of or section of society or any persons, they can also come in power with the majority, and majority means with the support of the people. Support किसका? किसी एक section of society का नहीं, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से। सो एवरीवन हैज राइट टू लाइक बी इलेक्टेड, गेट इलेक्टेड, राइट टू फॉर्म गवर्नमेंट थ्रू द मेजॉरिटी, एंड मेजॉरिटी मींस द पॉलिटिकल मेजॉरिटी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट। सो डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज अ चांस ऑफ बीइंग एन मेजॉरिटी एट पॉइंट ऑफ टाइम। तो डेमोक्रेसी तभी तक डेमोक्रेसी रह सकती है जब क्या हो? हर पर्सन के पास चांस हो कि वो मेजॉरिटी में आ सके। और हम मेजोरिटी का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई माइनॉरिटी सेक्शन है, कोई कम्युनिटी या रिलीजन है, दैट इन टर्म्स ऑफ नंबर, है ना, पॉपुलेशन उनकी बढ़ जाए एक तरीके से, वो दैट्स व्हाट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट every citizen or even the minority, they also must have chance to become the majority, means the political majority, that they also must have chance to come in the power. हर किसी के पास चांस हो कि वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सके, वो प्राइम मिनिस्टर बन सके, वो मिनिस्टर बन सके। Then we can say that democracy has been successful, and this is what the Sri Lankan example tells us. ये हमें श्रीलंकन एग्जांपल बताता है, ठीक है। So if someone is barred from being in majority on the basis of birth, then the democratic rule ceases to be accommodative for that person or group. और अगर क्योंकि एक पर्सन किसी रिलीजन से बिलोंग करता है या किसी कास्ट से बिलोंग करता है, तो उस बाय जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ, इफ द कंडीशंस आर स्टॉपिंग समवन to like be in majority, so then we can say that it is not part of democracy, and that system is not a democratic system. वो democratic system नहीं हो सकता। वहां पे क्या कमी है? What is the lack there? Accommodation. Accommodation of what? Accommodation of social diversity. तो सभी को accommodate करना बहुत जरूरी है। Accommodation of everything is very very important. Okay, now everyone just wait. Now, dear students, that's what the Sri Lankan example tells us, that these two conditions must be fulfilled by the democracy, and it is very important for the democracy to accommodate each section of the society. सारे section of society को accommodate करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Now, everyone, here you can see two cartoons. आप यहाँ पे दो cartoons देख सकते हैं, and through these cartoons, what we are understanding, हम अभी क्या समझ सकते हैं यहाँ से, that if अगर सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी लाइक एडवर्सरी, अगर वो एडवर्सरी होंगे, अकोमोडेटिव नहीं होंगी, इफ देयर विल बी नो अकोमोडेशन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, देन व्हाट विल हैपन? दिस कंडीशन विल हैपन। फर्स्ट, एनिमीज। और जब एनिमीज होते हैं, जैसे श्रीलंका वाले एग्जांपल में देखा ना, सिन्हलाज वर्सेस तमिल, सिविल वॉर ब्रोक आउट हुई, कंडीशंस बहुत खराब होती है, इकोनॉमिक फॉल आउट आल्सो हैपेंस। बट इफ सेम
same persons become like friends, or if there is an accommodation of the section of the society, then what happens? Greetings, है ना? दो second example. तो सोसाइटी में क्या, अगर accommodation होगा तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी एंड देयर विल बी प्रॉस्पेरिटी, देयर विल बी लाइक growth. So that's what we need to understand. Okay, now everyone, next example, next topic, that is dignity and freedom of the citizen. It is very important that in democracy everyone must live with dignity, everyone must have right to live with dignity. And what we mean by dignity, self respect. जो आपका self respect है, that is very very important, because democracy provides you equality, and with that equality the self respect comes. Democracy का core intention यही होता है कि equality establish करना, और उसके साथ क्या आएगा, जब आप सब या देश में रहने वाला कोई भी पर्सन, irrespective of caste, creed, religion, gender, or economical section, or economical weaker section, or like any section of society, if we feel equal, then we relate to each other, and then we say that there is no discrimination, then we can live with dignity. So dignity and freedom of the citizens are also very important essentials in the democracy. ये भी बहुत important essentials हैं democracy के अंदर, ये ध्यान रखना. So democracy stands much superior to any other form of government. Okay, that's what we have been discussing in promoting dignity and freedom of the individuals. So in promoting dignity and freedom of the individual, it is the democracy which stands apart from any other form of the government. In democracy, you get the dignity and all other things which are very important or essential part of the democratic process. So every individual wants to receive respect from fellow beings. Often conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. So in the society, if people are not treated with respect, then the conflict arises. If people are treated with respect, what everyone needs, that dignity, जो self respect है. अगर आप किसी को humiliation करो, if you discriminate someone, then what happens? वो एक inferiority complex, वो एक discrimination की feeling है ना, then that creates the problem in the society. So to remove them, what is necessary? That providing the equality, providing the freedom to each and every individual, there must not be any kind of discrimination. And if this happens, then we can say that democracy is thriving, and it is very important and essential part of the democracy. Now the passion for respect and freedom are the basis of democracy. So the passion for respect and freedom, very important, essential, important parts of democracy, component of democracy. Democracy throughout the world have recognized this in principle. So in principle, throughout the world, it is accepted concern that freedom and respect, it must be given to each and everyone so that people can live with dignity. This has been achieved in various degrees in various democracies. For societies which have built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. So earlier, on different basis, just takes an example of India. We also had that caste system in which certain caste of or section of society, they were considered like untouchables. Even many practices regarding untouchability used to be practiced. So that was a kind of unequal treatment. Inequality was there. It was socially produced inequality, and that's not a good thing for any country. So what happened after, when we got independence, we just removed abolition of untouchability happened, many acts and laws regarding the abolition of these kind of practices, caste practices. Many laws have been brought in our country. So earlier there used to be discrimination against women on the basis of gender. There used to be discrimination. So many laws have been brought to remove this discrimination also. So here we need to understand that as the countries, as the world is adopting the democratic form of government, democracy, so the world is also understanding the importance that everyone must be provided the freedom, everyone must be treated equal, and this is the core value, the principal part of the democracy. Okay, let's take simple example. Take the case of women. Most societies across the world were historically male dominated society. We used to have that patriarchy. There's a term called patriarchy. It means that male dominated society. So there used to be discrimination against the women, and in few extents still we find the different, still we find in certain pockets the discrimination, and that is not a good thing. So therefore, as we have already discussed, that equality is very important in democracy. So even gender basis पे भी discrimination नहीं होना चाहिए.
लेकिन जो आप वेस्टर्न कंट्रीज जिनको आप बहुत वेस्टर्नाइज या लिबरल मानते हो, वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता था. There used to be like unequal treatment against women. And here interesting cartoon is shown to you. Just go through this cartoon. Like um, here a lady who is sitting on a seat, and there on the other side you can say that our leaders today, hey lady, that's my seat. So the moral values are also in our mind, that there must not be any kind of discrimination. There used to be a discrimination against women, but throughout the world now it has become like a moral value also, that not only against women, on any basis there must not be discrimination. So the struggles, और it is not like very easy. सोसाइटी ने ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं कर लिया, इसके लिए बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो मूवमेंट्स चले टू गेट द राइट्स. वुमेन मूवमेंट्स चले अलग अलग इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी, कई सारे कंट्रीज में भी राइट्स लेने के लिए, इक्वल राइट्स लेने के लिए, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रिमूव करने के लिए, देन एक्ट्स वर मेड एंड राइट्स वर गिवन, इक्वल राइट्स वर गिवन. एंड जो दूसरे टाइप के डिस्क्रिमिनेशंस अगर होते हैं, उनके लिए भी टाइम एंड अगेन मेनी मूवमेंट्स हैपेंड. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट the rights, long struggles, not only by a particular section. Many sections who used to face discrimination, they did the struggles. Like here we are understanding about the women struggles. So long struggles by women have created some sensitivity today, that respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of democratic society. Now we understand the importance that there must not be any kind of discrimination. There must be equality. So this is very important to understand, that this is the core value of democracy, the equality. That now it has become a moral value that women हो या कहीं भी किसी भी बेसिस पे इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए. हाँ, सर्टेन पॉकेट्स में हो सकता है, अभी भी आप कहो कि नहीं सर, हम देखते हैं कि लाइक इन सर्टेन एरिया, इन सम context we still find the differences, we still find the discrimination. So time and again new programs, new things are being like established in democratic framework where इनको remove करना, ये जो अभी प्रॉब्लम्स अगर हम फेस कर रहे हैं थोड़े स्केल में भी, उनको रिमूव करने के लिए भी कोशिशें की जा रही है. मूवमेंट्स चल रहे हैं अलग अलग. डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे नहीं होना चाहिए, और यही डेमोक्रेसी की वैल्यू है. सो दैट डज नॉट मीन women are actually treated with respect. So still in few extent आज भी डिस्क्रिमिनेशन women के अगेंस्ट हो सकता है, एस्टेब्लिश हुआ हो, लेकिन इन मूवमेंट्स से ये जो वैल्यूज एस्टेब्लिश हुई, उनसे एक मॉरल वैल्यू तो बनी है कम से कम. आज हम सब अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ सर, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे हो वो नहीं होना चाहिए. तो एक प्रिंसिपल तो रिकॉग्नाइज हुआ है ना, यही आपको यहाँ पे बोल रहा है. बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, इट बिकम्स इजियर फॉर वुमेन टू वेज ए स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट इज नाउ अनएक्सेप्टेबल. So the discrimination has now become unacceptable, any form of discrimination. तो morally भी क्योंकि movements चले, तो लोगों में एक sensitivity आई इस चीज को लेके, that everyone must be treated with respect and with an equal, there must be equal treatment. So legally and morally also now it has become unacceptable, the discrimination. So in non-democratic setup, this unacceptability would not have legal basis. नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में हो सकता है लीगल बेसिस ना हो, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या है, लॉज बनाए जाते हैं, एक्ट है हमारे देश में. तो डिस्क्रिमिनेशन अगर वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन अगर किसी कास्ट के अगेंस्ट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट किसी रिलीजन के हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे लॉज है प्रॉपर जो इस अनइक्वल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट आप वहां से जो लॉ अप्लाई करवा सकते हो. वी कैन अप्रोच द जुडिशरी एंड दैट्स हाउ वी कैन जस्ट अप्लाई द लॉ. सो इन लीगल ऑल्सो, इन लीगल वैल्यू ऑल्सो नाउ वी हैव पावर to remove the discrimination. यही आपको ये टॉपिक बता रहा था, जो आपका टॉपिक था, दैट डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ द सिटीजन. सो अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा, इनइक्वालिटी नहीं होगी सोसाइटी के अंदर, इक्वालिटी होगी, तो ऑब्वियसली पीपल विल लिव विद डिग्निटी. लोग किसके साथ जिएंगे, डिग्निटी के साथ जिएंगे. एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. People will have the freedom, they will have the dignity, because they know that we all are equal. हम सब equal हैं, हमारे में कोई differences, natural differences हो, that's another matter, but otherwise we don't have any kind of discrimination. There is no no differences. There is no socially produced inequality. Society के जो produced inequality is वो खत्म हो, ये सबसे important है. तो that is your last topic, that is dignity and freedom of the citizens. So this cartoon is showing you that moral courage. Now all we understand that women are also getting their rights, they are also getting their share, and because the movements the sensitivity has generated that in the minds of the people,
and a moral value has been generated that there must not be discrimination on the basis of gender. So this is all about the chapter outcomes of democracy. So in this chapter, we have gone through each and every aspect of the topic, that how can we assess democracy and what are the core values of the democracy. So thank you everyone. Thank you very much.